the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower. This is ESL Academy of Linguistics and Literature, and we are discussing about speaking skill. Today we are going to discuss Nikel's Day at School. It's from our speaking skill book. Let's see. Prior to start our today's topic, I'd like to discuss about today's idiom. There are some idioms. Kindly note it down. Very first is pay a compliment. What is the meaning of pay me a compliment or compliment? Paying a compliment. Paying a compliment means admiring, giving some admiring comment. To give someone admiring comments. To admire someone. To say some good words about somebody. It is known as paying a compliment. Then we have another idiom, head and shoulder above. What is the meaning of head and shoulder above? Head and shoulder above, for superior to, Allah, supreme, very well done, good work. Head and shoulder above. Sobia and Sabah, you both are standing head and shoulder above in class. It means you are doing good work. You are standing at the top of the class. You are going ahead in a class. This is what the mean of head and shoulder above. It means you are doing good work, excellent work, far superior to other, going ahead and getting headway in class. And then we have another idiom, way to go. Way to go, you mean to say you are doing well done in class, you are doing good work in a class, you are learning well. I can say good work. I can say way to go. This is very nice work, good path, good direction, good way of doing, good work. इसको हम कहते हैं way to go. When you are doing well, I can say way to go. This is way to go. Go into का मतलब लिखिए to choose, to enter a profession. It's a good field to go into. You are going into good field. You are going into literature field. You are going into linguistic field. Going into का मतलब है किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना, किसी में दाखिल होना, किसी को चूज करना, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को अडॉप्ट करना. गोइंग इनटू, इसको कहते हैं गो इनटू. आप इसका उर्दू में मतलब लिख सकते हैं ताकि आपको याद रखे. आगे है हमारे पास गंग-हू, GUNG, गंग-हू. गंग-हू जो है ये अमेरिकन जब चाइनीज सोल्जर के साथ इनका इंट्रैक्शन हुआ तो वहाँ से इडियम जो है वो बना है. चाइनीज जो फ्रेज़ है ये, और चाइनीज से बारो किया कहाँ, किन्होंने, अमेरिकन सोल्जर्स. अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ये बारो किया. ये एक इडियम है गंग-हू जो कि चाइनीज फ्रेज़ है, और आजकल इसको इंग्लिश जो अमेरिकन है वो यूज़ करते हैं. गंग-हू, वेरी एक्साइटेड, इमोशनल. यू आर गंग-हू एट योर सक्सेस. गंग-हू का मतलब एक्साइटेड, इमोशनल, परजोश, एक्साइटेड. यू डन मार्वलस एंड यू आर एक्साइटेड. इट्स गंग-हू इडियम है, ये लिख लें. It's a Chinese phrase, but it is taken by American soldier and they are using in their language. Gung-hu. Butt in का मतलब होता है interfere. Why are you butting in my affairs? Butting in या butt in का मतलब लिख लें interrupt, interfere, मुदाखलत करना, disturb करना. Butt in, BUTT, butt in. आगे लिखें drive me crazy. ड्राइव मी क्रेजी का मतलब लिखें टू अनॉय समवन, किसी को नाराज़ करना, किसी को एंग्री कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को परेशान कर देना, किसी को अनॉय कर देना. टू अनॉय समवन. टू अनॉय समवन का मतलब ड्राइव मी क्रेजी. यू आर बाय टेलिंग योर प्रॉब्लम यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी. अपनी प्रॉब्लम बताकर तुम मुझे अनॉय कर रहे, परेशान कर रहे हो. यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी. By calling again and again, you are driving me crazy.
आप मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार कॉल करके. यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. डोंट ड्राइव मी क्रेजी वाइल इंटरप्टिंग इन माई अफेयर. ड्राइविंग मी अकेर क्रेजी का मतलब होता है अनोए, परेशान करना, नाराज करना. हिट द नेल ऑन हेड, गुड डिसीजन. By selecting, I can say to Sobia selecting English literature field. Selecting English literature, you have hit the nail on head. Hit the nail on head. You have taken right decision. Selecting English literature field, you have hit the nail on head. आप बोल सकते हैं you have hit the nail on head while selecting English literature field. You have hit the nail on head while taking the right decision. You have hit the nail on head while selecting linguistic field. You have hit the nail on head while passing English literature exam. You have hit the nail on head while completing grammar class. ग्रीन विद एनवी. ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है जेलसी. शी इज गेटिंग ग्रीन विद एनवी while knowing or learning about your status or while knowing about your status. आपका स्टेटस जानकर शी इज गेटिंग ग्रीन विद एनवी, जेलस होना. ग्रीन विद एनवी, एनवी का मतलब होता है, एनवी का मतलब जेलस होना. थिन आइस विद मी. थिन आइस का मतलब लिखें अगेंस्ट समवन. शी इज एब्सोल्युटली थिन आइस विद मी व्हाइल हियरिंग अबाउट माई सक्सेस. अगेंस्ट हूं, किसी के साथ हूं. when he saw her girlfriend in cinema with somebody, he turned thin ice with her. Against someone, किसी के खिलाफ होना. Shaking in my shoe, afraid, fear. While listening to the earthquake, she was shaking in my shoes. She was shaking in my shoes का मतलब लिख लें afraid, fear. Shut up. Shut up का मतलब होता है stop speaking. किसी को आप चाह रहे हैं कि वो मज़ीद ना बोले तो you can use this idiom. Let's start. Nicholas' day at school. Nicholas tells her mother Susan about the successful presentations at the school. Her brother Ted overhears, interrupts the conversations. अब नाइकल्स जो है वो नाइकल्स बेटी है किसकी, सूजन की. वो अपनी मदर को बता रही है, शी इज़ टेलिंग हर मदर दैट शी हैज़ डन वेल इन while presenting her presentation. When she was presenting her presentation, she presented well and all were happy in school while she was presented her presentation. So what happened? Ted, you know that he did not perform well in school, so he overhears the story and he interrupts the conversation. अब जो टेड है वो स्कूल में अच्छा काम नहीं करता, टेड. और जो उसकी सिस्टर है नाइकल्स, शी इज़ वर्किंग वेल एंड शी इज़ टेलिंग हर मॉम शी इज़ डूइंग वेल इन अ क्लास एंड शी हैज़ presented well presentations in her class. सूजन कहती है, जो माँ है उनकी मदर है, कहती how was your day at school today, Nichol? Nichol कहती है, it was great mom. I give a presentations on Hillary Clinton's in government class. Afterward, my teacher paid me a compliment. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, एडमायर करना, टू से सम गुड वर्ड. ये मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने प्रेजेंटेशन दी हलेरी के बारे में और मुझे मेरी टीचर ने कॉम्प्लीमेंट दिया. सूजन, व्हाट डिड शी से, व्हाट शी से. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट शी से. आपने
W को किसके साथ सीधा मिला देना है? What she say, what she say, what she say. हमें इतनी लंबी जो जब हम बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं अलिजन्स और ओमिशंस को, बहुत सारी चीज़ों को ओमिट कर देते हैं स्पीकिंग में. What she say, what she say. आप what did she say जब आप स्पीकिंग में इसको बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? What she say, what she say. तो बोलने वाले को पता नहीं चलता कि ये what did she say कह रहा है या what she say. So what she say, what she say. उसने क्या कहा? सूजन कहती है, नाइकल, she said my presentation was head and shoulder above the other. She said my presentation was my presentation. देखिए मैंने आप बोला presentation, presentation, presentation. फा के ऊपर जो फा है इसके ऊपर जोर है, यानी इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सिलेबल पे जोर देते हैं तो ये नाउन बन जाता है. अगर सेकंड पे नाउन जोर देंगे तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ब बन जाता है. जैसे मैं आपसे कहता हूँ प्रेजेंट या प्रेजेंट, तो अगर सेकंड सिलेबल पे जोर देंगे तो वो वर्ब बन जाएगा. फर्स्ट पे देंगे तो वो नाउन बनेगा. आई हैव गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, यू प्रेजेंटेड गुड प्रेजेंटेशन. So there is a difference. Once you give stress on the second part of syllable, it becomes verb. But once you emphasize on first part of the syllable, जो word का first syllable होता है उस पे जोर देते हैं तो वो noun बन जाता है. हाँ, जो words होते हैं वो मुख्तलिफ syllable से मिलकर बनते हैं. किसी में मोनोसिलेबल होता है, किसी में डाइसिलेबल होता है, किसी में ट्राइसिलेबल होता है, कहीं में मल्टी सिलेबल्स वर्ड होते हैं. जैसे मल्टीप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे सिलेबल. ब्यूटीफुल. नाइकल, शी सेड माय प्रेजेंटेशन वाज हेड एंड शोल्डर अबव द अदर. हेड एंड शोल्डर अबव, मैंने अभी बताया कि सबसे अच्छी मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे अच्छी है. उसने कहा सूजन वे टू गो. अब मैंने अभी बताया वे टू गो का मतलब होता है कि गुड वर्क, यू आर डूइंग वेल, वे टू गो. आप मेरे पास आए, मुझे बताएं, सर आई अपीयर्ड इन एम इंग्लिश एग्जाम एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव डन वेरी गुड वर्क इन ए क्लास. आई विल से वे टू गो, वेरी नाइस जॉब, यू हैव डन वेल, वेल डन, यू हैव डन वेल. सूजन वे टू गो. Says Susan, where to go? You have done well. Nicole, she also said I should go into politics just like a lady. उसने मुझे ये भी कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या ज्वाइन करनी चाहिए. Ted, you are gung-ho. Gung-ho, मैंने अभी बताया gung-ho का मतलब very excited, तुम ज़्यादा इमोशनल हो गए. You are so gung-ho about school. It drives me crazy. Drives me crazy? Drives me crazy? मुझे परेशान करता है, मैं नाराज़ होता हूँ इससे. You are so gung-ho about school. तुम ज़्यादा ही इमोशनल हो स्कूल के बारे में. It drives me crazy. मैं इससे नाराज़ होता हूँ, ये मुझे नाराज़ करती है ये बात तुम्हारी. Nicole, Ted, don't burden. You are just jealous. बार्डन का मतलब अभी बताया इंटरप्ट. मुझे मेरी बातों में, मेरे कामों में इंटरप्शन ना करो. डोंट बार्डन, यू आर जस्ट जेलस. बात होता है ना, हम कन्वर्सेशन डिस्कोर्स कर रहे हैं किसी से तो तीसरा आदमी आगे इंटरप्ट करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं डोंट बार्डन, यू आर जस्ट जेलस, जस्ट गेट अवे, वी डोंट वांट टॉक टू यू. डोंट बार्डन, डोंट इंटरप्ट, डोंट मिडल इन आवर अफेयर. यानी कि सारा इन सब का मतलब एक ही है. डोंट इंटरप्ट, डोंट मिडल इन आवर अफेयर्स, डोंट बार्डन, मीनिंग्स आर सेम. राइट कहता टेड, राइट, यू हिट द नेल ऑन द हेड. आई एम ग्रीन विद एनवी. ग्रीन विद एनवी, जेलस. यू हिट द नेल ऑन हेड, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया या तुमने बहुत अच्छा काम किया. यू हिट द नेल ऑन हेड. नेल ऑन हेड का मतलब यू हैव डन वेल. आई ग्रीन विद एन, मैं जेलस हो रहा हूँ. आई एम ग्रीन विद एन. नाइकल, वुड यू जस्ट शट अप. अब नाइकल उसको कहे वुड यू जस्ट शट अप.
वुड यू, आप इसमें वुड यू जस्ट शट अप, तो आप इसमें कैसे, वुड यू शट अप, वुड यू शट अप, वुड यू, आप उसमें पूरा लफ्ज़ ना बोलें। स्पीकिंग स्किल में जब हम बोलते हैं तो उसमें वुड यू शट अप, वुड यू जस्ट शट अप, वुड यू, यानी जैसे वुड यू कहते हैं ना, W और JU लिख के अगर हम स्पीकिंग में बोलेंगे तो हम इसको कैसे बोलेंगे, वुड यू जस्ट शट अप, वुड यू शट अप। आप वुड यू पूरा ना बोलें, स्पीकिंग और होती है और राइटिंग में और होती है, तो वुड यू जस्ट शट